जैसे मेरा ये स्क्रीन शेयर हो गई आज मैंने Sorry for interrupted. I am pleased to introduce our esteemed resource person for his this week-long teacher training on a skill for effective teaching. Dr. Mohammad Abid Siddiqui is a highly respected expert in their field with 14 years of experience. I can't explain his personality in a few words. Professor Mohammad Abid Siddiqui hail from the village Tejpur district, Bijnor, UP. After completing MSc Botany degree from Hindu College, Muradabad, Rohilkhand University, Bareilly, UP, he has he joined Aligarh Muslim University for the further education and received B.Ed, M.Ed, M.Phil and PhD education degree from Department of Education. During research, he qualified GRF examinations and received scholarship from UGC. He started his career as assistant professor in Department of B.Ed, Gajtulwara PG College, Gajtulwara Kaswal of Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. After getting selected through the UP Higher Education Services Commission in 1999, he has appointed an assistant professor in Department of Education, AMU, Aligarh in 2009, and later on got his selection in associate professors through the General Selection Committee in March 2015. Presently, Dr. Siddiqui is working as a professor of education in Department of Education, AMU, Aligarh since 2018. He has 3 published books for his credit, namely Secondary School Dropout, Essentials of Guidance and Counseling, and Issue of Challenges of Secondary Education. Dr. Siddiqui also contributed many chapters in edited books and more than 35 research papers in Journal of National and International reputes, besides presenting several papers in national and international seminars and conferences. He has successfully supervised 7 PhD theses and 5 research scholars. One of PDF are working under his supervision. He has also guided about 25 MA dissertations. His interest areas are guidance and counseling, inclusive education, psychology, and research methodology. He regularly delivers lecture in orientation and refresher courses organized for the madrasa, school, colleges, university, teachers, and resource persons. He has the passion of guiding and counseling to the students of the class by engaging them in every interactions of assisting in resolving their academic and personal issues. Then I am request Professor Abid sir kindly proceed this session. Yes, sir. Yeah. Thank you very much. I'm just starting in 2 minutes. I think I am audible to all. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. Thank you, Rafiq sir, for a very wide introduction about me. My introduction is just I am a teacher. And today I am delivering a lecture on significance of guidance and counseling and the role of the teacher. In this lecture, first of all, we will try to understand what are the conditions or situations of the stress
in India and at international level, and how the employees, teachers are under stress, and how the students are under stress, anxiety and frustration. It is a common problem, and nobody, including me, can say, okay, I don't have any stress issue or don't have any anxiety or occasional frustration in the life. ये बड़ी कॉमन सी बात है. दूसरी चीज, जब ये हमें पता चलेगा कि ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है, the mental health of all the students, all the teachers and all the pupils is suffering a lot, then definitely we will have to think about the guidance and counseling, which is one of the aspect or remedy for it. Then we need to understand what is guidance and counseling in this lecture, how guidance is different from the counseling, number one. Then who are actually in need of the counseling? किन लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है? कौन कौन सी क्राइटेरिया है? I will present before you the list of that. Then we will try to get the answer of this question: why guidance and counseling? For what purpose? In other words, we can say what is the significance of the guidance and counseling, and why guidance and counseling is essential for the students or for educational institutions. उसके बाद फिर हम देखेंगे कि we all are the teachers or the would-be teachers or working somewhere in any associations. Definitely some people will be under us, and being a teacher, we have to deal the mental issues of our students. तो last में हम देखेंगे what is my role as a teacher, how can I play my role as a guidance counselor. ये इन issues पर मेरा lecture जो है आज का concentrate करेगा. First of all, let us analyze what is the present situation. If we look to the population of India, these figures may vary in 2 or 3%, but these figures I have collected from the internet. 77% of India's population suffering from stress and 88% from the anxiety. So this is the level of the stress and the anxiety. This stress, I'm not saying this stress is because of the academic stress, but our population is stress-ridden and anxiety-ridden. They are in stress and they are in anxiety. And everybody knows when we are in stressful situations, when we are in extreme anxiety, then our performance affects to a great extent in a negative direction. हमारी जो performance है वो negative direction की तरफ चली जाती है. If we are a student, then we are not performing up to our potentials. If we are a teacher, then we are not able to perform up to our potentials as a teacher. और ये जो percentage है population की 77 and 78%, इनमें से अगर आप देखें 28% are in the age group of 18 to 29. The important and the significant age in the life of the individual is 18 to 29, because at the age of the 18, students enter in higher education, and up to about 29 years, they reach to higher education, research, complete their research, or they are in the process of occupying their position in the job market. 20% in the age group of 30 to 40%. 30 से 39 तक जबकि एक मैरिज की एज होती है, उस वक्त जो है 20% करीब लोग जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की सिचुएशंस में हिंदुस्तान के अंदर है. 93% employed are under stress. It is a very serious issue कि about half of population who are working, employed people, they are under stress. Can you expect the quality of work under stressful situations? It is not possible for anybody. And 73% married are under stress.
ये अभी आपको बताया कि 30 to 39% की कैटेगरी के लोग हैं. Females are 1.6 times more affected as compared to the men because of the nature of our society, which is male-dominated society. So here, female stress among male and the female is greater than the male. In other words, we can say people living in urban metros are 2.3 times more stressful than the rural areas. जितने भी हमारे metro cities हैं, this life seems to us very fascinating. बड़ी fascinating ये life हम लोगों को लगती है. But this life causes a lot of stress and anxiety in the minds of the people. The people who are living in rural areas, in spite of their low socio-economic status, they are better handling the stress and the anxiety situations, because if we look into the metropolitan cities and the big cities, then we see there is a stiff competition among all the people, and people are striving hard to achieve their expectations. There is a stiff competition among the students, among the teachers, and among the businessmen and all populations. 75% don't feel comfortable talking to medical professionals. This is the irony of the situation. Is 75% लोग ये समझते ही नहीं हैं कि उनको जो है मेडिकल हेल्थ की जरूरत है. मेडिकल हेल्थ के बारे में सोचते नहीं. क्यों? Because we have a negative attitude towards guidance and counseling. If anybody is going to the counselor, then we call them the person is suffering from mental problem. This is a negative attitude. Although guidance and counseling is equally important for all, I will come later on to that topic. Main reason being failure in examination. और ये सारे जो student life के, अगर हम student की category को सारी population से अलग कर लें, if we separate the population of the students from entire population, then most of the stresses and the anxiety and the frustrations are from examination, failure in the examination, fear of the examination, poor academic performance, unemployment situations, and depressions, leading to depression. ये situation है. I'm changing my slide. It is creating a little bit problem. Yes. Now come to the occupational stress. अब थोड़ा सा occupation की भी बात करते हैं. Occupational stress among teachers. Teaching is the most stressful job, most challenging job, because teachers are supposed to be the backbone of the society. They are the torch bearer. They produce the leaders of the tomorrow. National Foundation of Educational Research ने कहा कि teaching जो है सबसे ज़्यादा stressful job है, because handling the human machine, this human machine, it is not an easy task. It is not an easy task, because we are handling the human machine, or we are dealing with the students, and students have many aspects. They have their intellectual aspect, they have social aspect, emotional aspect, spiritual aspect. Sabko dekhna, thinking about all aspects and providing the way or grooming their personality is always a challenging job. Those who are dedicated teacher, effective teacher, they know the significance of the task of the teachers. 20% teachers feel extremely tensed about their job. It is because of this reason. Okay, they find it difficult to do justice. Stress is too much among the teachers. Ye stress kahan se aa raha? From where this stress is coming? This stress is coming because of the poor salary provided by the private educational institutions, and they are taking more work from the teachers. More work from the teachers. Teachers are under stress. Can you expect
from the teacher who is stressful situations to perform better in the classroom, or to transfer the positive energy to their students. That is not possible. What we transfer the same energy to our students. If we feel happy, if our mental health is healthy, then definitely that will be transferred to the students in our temperament, in our behavior, in interaction with the students. आप देखिए, teachers are busy in admission process, examination process, assessment process. Task of other universities and other departments are also there. There are various programs which are generally conducted by the teachers, and the reports are sent to the institutions or concerned departments. आप देखिए, आप किसी भी टीचर से बात करके देखिए तो ये कहेगा कि now teaching has become a very stressful job. Organization of various programs, preparing and sending reports, इसी में सारा वक्त गुजरता है. I am associated with the university. It is a central university, and we make many kind of the data, and all the time we are basically in the process of collecting data and summarizing and sending it to the government for various agencies, just like NEC and other things. Same is true with the case of the schools. Many programs are asked to be organized by the schools, and they organize the program. हर इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. प्रिंसिपल चाहता है, मैनेजर चाहता है कि टीचर अपनी सब कुछ एनर्जी लगा देते हैं. उनकी भी एक्सपेक्टेशन, वहां से भी प्रेशर आता है. फैमिली का भी प्रेशर आता है कि फैमिली एक्सपेक्ट टू प्ले equal role and to give time to the family, but the teachers are not able to give the real time to their family or a respectable time to their family, because they come to the home and they bring some work fun at home also. वहां पर भी वो बिजी रहते हैं, छुट्टियां भी कम होती हैं. Promotion related issues, job security, job insecurity, it is particularly related to the contractual teachers and the temporary teachers and the teachers who are working in the private educational institutions. And they are expected to perform more work. Now come to another aspect. अब ये सारी situation से मैंने आपको बताया कि first of all I will try to explain what is the present situations in present circumstances. क्या situation है आज के हालात में. Student की sufferings हमने देखी और teachers की suffering हमने देखी. If students are also suffering, if the teachers are also suffering, if they are under stress, they are in anxiety, they are in frustration, they are not performing up to their potential, then what to do? Here the role of the guidance and counseling is there. That is very positive. Guidance and counseling का रोल बड़ा पॉजिटिव हो जाता है. अब आपको समझने की जरूरत है कि हम कहते हैं कि सब गाइडेंस की क्या जरूरत है, हम तो मेंटल बीमार हैं. Are we suffering from mental problems? No, nobody is suffering from the mental problem. Nobody, not a single person in this world can say, I have led my life without taking the guidance from others. The whole life of the human being, from day first to the last day, we seek guidance from our youngers, seniors, family members, brothers, sisters. While we are traveling, we get many experiences. Age से भी आपको guidance मिलता है. अब guidance क्या चीज है, ये इसकी definition क्या है और ये counseling से कैसे difference है, इस slide के अंदर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. हालांकि ये basic चीजें हैं, and as I know, all the participants are either the research scholars or they are the working teachers, so they know the basic idea of what is basically the guidance and how it is different from the counseling. Guidance क्या है? It is an organized set of specialized services meant for achieving the objectives of education. स्कूल के अंदर बच्चा जाता है, टीचर पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करता है चीजों को, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है. मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन.
We are basically trying to achieve the objectives of education in all educational institutions, whether it is in a school, whether it is a university, whether it is any religious or any other organization, educational organization or educational institution. हम education का objective हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. And what is the objective of education? All round development of the individual personality, cognitive, affective and psychomotor domain. दिमाग का development, hearts का development, feelings का, interest का, aptitude का development और energy का, enthusiasm का, regularity and punctuality का या skill का development. इस सारा development मिला करके कहते हैं total personality development. In other words, we can also say, with the help of the definition given by the Mahatma Gandhi about education, education is all round drawing out best from the individual personality, physical, intellectual, social, moral, and spiritual aspect. Morally, a person must be stable. Physically, he must be stout. Intellectually, he must be alert. He must have the feeling of a poet. ये सारी चीजें हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर लाते हैं. गाइडेंस, तो अब गाइडेंस का क्या काम है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड सर्विस है और इसका पर्पस क्या है? एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एजुकेशन इज द बेसिकली द पर्पस ऑफ गाइडेंस. गाइडेंस इनेबल्स ईच. अब ये गाइडेंस करता क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शंस ऑफ द गाइडेंस? क्यों गाइडेंस देते हैं? इसका क्या फंक्शन? एजुकेशन के अचीवमेंट को, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए. और ये करता क्या है? गाइडेंस इनेबल्स ईच इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिज और हर एबिलिटीज, डेवलप देम as far as possible, to relate them to the right goals, and finally to reach a state of complete and mature guidance. तीन चीजें इसके अंदर बताई गई. First of all, we must know our abilities and the capabilities, strengths and weaknesses as far as possible. To relate them to the life goals. आप क्या करना चाहते हो? What do you want to be in your life? What are your goals, life goals and aspirations? उन aspirations को समझिए, अपनी कैपेबिलिटीज को समझिए और उनके बीच में एक स्टेट बनाइए, एक रिलेशन बनाइए. टेक फॉर एग्जांपल, if any student is a slow learner and he has decided his goal to become an IAS officer, then it will be very difficult to achieve this goal for that purpose, that person. Why? Because slow learners will face tremendous pressures and tremendous difficulty to reach to that level of education. तो हमें अपनी एबिलिटी का पता होना चाहिए और ये पता नहीं होता. Our education system is so weak that it fails to tell the real strength or the weaknesses of the students. टीचर हमें बताता है, जब हम बच्चों से कहते हैं ग्रेजुएशन में, बीएड में, you are a very good student, he feels escalated कि अच्छा मैं स्टूडेंट अच्छा हूं. इसका मतलब यह है कि हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है, it has never tell to our student what are their strengths and what are their weaknesses, because our achievement or academic achievement has many drawbacks and many shortcomings. तो हमें ये पता होना चाहिए कि what are my weaknesses and the abilities, what are my life goals, and how to coordinate the abilities and the life goals. Guidance is a service meant for all and continue. Guidance काउंसलर क्या करता है? काउंसलर ये काम करता है कि वो स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करके उसको बताता है कि यू हैव सच एंड सच पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. फिर वो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि these are the so many courses, so many areas, so many research dimensions where you can go. अब वो खुद एक अपने आप में the person is able to take decisions based on the knowledge of himself and herself and the knowledge of the employment opportunities in the market. इसको कहते हैं intelligent taking, assisting the individual to take intelligent decisions
that is the guidance. A service meant for all and it is a continuous process. लोग कहते हैं कि साहब एक बार आपने गाइडेंस ले लिया, अब क्या जरूरत? नो, फिलॉसफी समझिए गाइडेंस की. ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द गाइडेंस. गाइडेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस. It starts from the beginning of the life of a person and completes at the end of the life. उसके और सबके लिए है, यानी कि इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स, इवन द टीचर्स आल्सो नीड गाइडेंस. घर के लोग भी गाइडेंस की जरूरत होती है. और जरूरत क्यों होती है? बिकॉज वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ and it helps us to make better adjustment and it also makes us self-directed. हमें ये एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है. और ये क्या है? गाइडेंस क्या है? ये जनरलाइज भी सर्विस है और स्पेशलाइज सर्विस भी, और एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि चेंज भी इसके अंदर होता रहता है. चेंज कैसे होता है? देयर आर सर्टेन नीड्स टुडे and the tomorrow the needs are changing, then we have to revise our strategy of providing guidance to our students. Guidance क्या है? एक जनरल सर्विस भी है, जनरलाइज भी है, और एक स्पेशलाइज सर्विस. जनरलाइज क्या है? आप रास्ते में खड़े हैं, किसी ने कहा कि मुझे स्टेशन जाना, जरा रास्ता बता दीजिए, यू कैन गाइड द पर्सन. लेकिन अगर वो कहता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम्स, then you cannot provide the guidance. Then you need specialized services. For that, need of the counselor will be felt or will be there. Counseling क्या है? Guidance के according, counseling is a learning-oriented process carried out in a simple one-to-one social environment between counselor and the client. Guidance तो ग्रुप में भी दिया जा सकता है, लेकिन काउंसलिंग जो है वन टू वन सिचुएशंस के अंदर, जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में डिस्कशन होता है एंड द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स सम सजेशन. लेकिन यहाँ पर काउंसलर जो है वो सजेशन प्रेस्क्राइब नहीं करता है, रादर ही असिस्ट द इंडिविजुअल in giving certain knowledge about that individual, about the environment, and opens his eyes and his thinking on that particular issue. जब हमें चीजें पता चल जाती हैं, उसके पॉजिटिव निगेटिव पता चल जाते हैं, तो वी कम इन पोजीशन टू टेक गाइडेंस. अब क्वेश्चन ये आता है कि हु आर इन नीड ऑफ द गाइडेंस. गाइडेंस हमने समझ लिया. गाइडेंस एक स्पेशलाइज सर्विस भी. अगर ये स्पेशलाइज सर्विस हो जाती है तो फिर ये काउंसलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. जनरलाइज भी है, इसका मतलब ये हुआ कि टीचर भी गाइडेंस दे सकता है. टीचर इज आल्सो इन ए पोजीशन टू गिव द गाइडेंस, but teacher is not in a position to give the counseling. I will come later on this topic also. कि आप इसको ध्यान में रखिए कि teacher is entitled to provide guidance, but the teacher is not entitled because of the lack of professionalism in that area. He cannot provide, or he should not provide the counseling to the students. अब किन को जरूरत है ये भी आइडेंटिफाई करना किसका काम है? It is the task of the school authorities as well as the counselor and the teachers also. Students suffering from stress, anxiety and depression. एक बात ध्यान में रखें हम सब लोग, I am also included in that. Stress, some amount of stress is also very necessary to do the task. Some anxiety is also very necessary to do the task. Take for example, today I am going to deliver a lecture. तो जब तक थोड़ा सा स्ट्रेस मेरे लिए नहीं होगा तो मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा? जब तक आपके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी ज्वाइन करने की, हाउ यू विल बी एबल टू ज्वाइन. लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की 3 स्टेजेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. माइल्ड तो ठीक है, एज सुन एज इट एंटर्स इनटू द मॉडरेट लेवल, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. और जब सीवियर कैटेगरी के अंदर हो जाती है तो फिर आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से, हम अपनी एबिलिटी के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि बहुत कुछ नहीं कर सकते. कंसिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफ अंडर अचीवमेंट. कुछ स्टूडेंट्स हैं अंडर अचीवमेंट है उनका. अंडर अचीवमेंट किसको कहते हैं? अंडर अचीविंग स्टूडेंट्स उनको कहते हैं कि कैपेबिलिटी तो है बट देयर रिजल्ट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट कैपेबिलिटी. देखने में बड़े पॉजिटिव लगते हैं, देखने में इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन जब मार्कशीट सामने आती है तो अंडर अचीवमेंट होती है.
और अंडर अचीवमेंट्स आर क्वाइट लार्ज इन नंबर इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बहुत ज्यादा अंडर अचीवर हमारे, बिकॉज पीपल आर जनरली शाई इन नेचर, इंट्रोवर्ट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, क्लासरूम के अंदर बोलते नहीं हैं, कोई क्वेरी उनके अंदर होती है मालूम नहीं करते हैं, दे डू नॉट सेटिस्फाई देयर इंटेलेक्चुअल अर्जेस, और जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो अंडर अचीवमेंट हो जाता है एंड दे आर सेटिस्फाइड। एंड मोस्ट ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन इंडिया आर अंडर अचीवर्स, because they feel themselves superior, superiority की complex की feeling उनके अंदर आ जाती है, तो superiority की feeling आ जाती है तो they start learning, और जब learning को they stop learning, जब वो learning को stop कर देते हैं तो definitely the progress also stops, scholastic achievement drops suddenly, बड़ी तेजी के साथ बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस थी, द पर्सन वाज वेरी गुड इन 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास एंड 9th क्लास, एंड एज सून एज ही और शी एंटर्स इन 11th क्लास और 12th क्लास, हिज एकेडमिक अचीवमेंट और स्कॉलास्टिक अचीवमेंट ड्रॉप सडनली। तब आपको देखने की जरूरत है कि इसको कुछ जरूरत है, द पर्सन इज सफरिंग सर्टेन प्रॉब्लम। आइसोलेटेड और नेग्लेक्टेड स्टूडेंट, लोगों से दूर रहना, नेग्लेक्ट उनको हम कह देते हैं, द पीपल हु कीप्स देमसेल्फ अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम्स ऑफ द सोसाइटी, क्लास के बच्चों से दूर रखते हैं, सोशल सिचुएशन से अपने आप को दूर रखते हैं, तो हम क्या कहते हैं उनको, इट इज एन आइसोलेटेड पर्सन। एंड वी आल्सो नेग्लेक्ट सच स्टूडेंट, वी नेवर थिंक अबाउट देम if they are the sufferers, because it is not a human tendency to be isolated, it is not a human beings are social animals, they enjoy social participation, social engagements, सबके अंदर पार्टिसिपेशन वो करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। If someone is behaving like an isolated person, it means the person is suffering certain kinds of problems. We need to identify and provide guidance and counseling services. Use exhibitionism for gaining it. बच्चों की ये characteristic features होती है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके अपनी तरफ अटेंशन करने की कोशिश करते हैं, अटेंशन सीकर स्टूडेंट को हम कहते हैं। वहां पर भी समझने की जरूरत है, व्हाई द चाइल्ड इज बिहेविंग इन सच ए मैनर, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही और शी इज फेसिंग, हैविंग एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम उनके अंदर है, इरिटेशन रहता है, हेडेक रहता है, और दिल नहीं लगता, वोमिटिंग सी फील होने लगती, ये कुछ माल एडजस्टमेंट के साइन है। वो अगर माल एडजस्टमेंट है तो वी नीड टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस बेसिस पर। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। सडनली डिसाइड टू ड्रॉप आउट स्कूल एंड कॉलेजेस, अचानक फैसला करता है स्टूडेंट कि आई शुड नो लॉन्गर बी स्टे इन द इंस्टीट्यूशन एंड बेटर टू लीव द इंस्टीट्यूशन। लीविंग किसको कहते हैं? आइसोलेशन को कहते हैं कि यू आर नॉट फिट, you feel misfit in the educational institution and you are isolating from the institution and want to separate yourself from the mainstream and go to the home. आप घर पे बैठना पसंद करते हैं, स्कूल में जाना पसंद नहीं करते, ये आइसोलेशन की सिचुएशन कहलाती है। There may be some other problems related to the dropout, but this is also one of the problems. Have behavior problems, उनके बिहेवियर बड़े अजीब और गरीब होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, कभी sometimes they behave in a very good manner and sometimes they behave in an awkward manner. इरिटेशन की कंडीशंस उनके अंदर आ सकती है। और कौन है इस लिस्ट के अंदर? who display unusual ability, जिसको मैं कहता हूँ टैलेंटेड, गिफ्टेड, और उनकी पॉपुलेशन कितनी है? Their population is about 2 to 3% in all educational institutions, in all class. हर क्लास के अंदर 2 या 3% बच्चे टॉप वाले होते हैं, IQ लेवल वाले होते हैं, because our teaching method is basically providing education to the large masses. देखिए, अगर हम IQ की बेस पर पूरी क्लास को डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी के अंदर लोग आते हैं, 16% above average, 16% below average और 68% average student. अब जो क्लास में टीचर कहता है कि have you understood, you got my point,
तो सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यस वी गॉट द पॉइंट। किनकी आवाज होती है? 68% की आवाज होती है। और आपके जो 16% अपर वाले हैं उनकी भी समझ में आ जाता है। दे एंजॉय, दे क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम। उनको सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है जो टॉप 16% होते हैं, बिकॉज दे आर द लीडर ऑफ द सोसाइटी, they are the producer of the knowledge, they are the researcher, they are the innovators, and they are the leader in different other areas also. उनके भरोसे हम सारे काम करते हैं, लीडर के पीछे हम लोग चलते हैं। किसी ने इनोवेशंस की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, कितना बड़ा काम हुआ। एरोप्लेन को इन्वेंट किया, कितना एक ही दो लोगों ने स्टार्ट किया होगा, एंड अदर्स ज्वाइन द हैंड एंड वी लेड टू such a great invention. Adolescents के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है, because it is in a stage of transition, it is in a stage of turmoil, stress and anxiety इसके अंदर ज्यादा होती है, because the status of the individual is not decided. Sometimes parents say don't consider yourself as a child. आप बच्चे समझ रहे हो अपने आप को, अब तो बड़े हो गए। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कर लेता तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा अब हमें सिखाओगे, अभी तुम इतने बड़े हो गए हो। तो देयर स्टेटस इज अनडिफाइंड इन द सोसाइटी, और यही स्कूल कंडीशंस के अंदर होता है। एंड डेफिनेटली देयर फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, अदर डेवलपमेंट्स आर आल्सो टेकिंग प्लेस एट दिस स्टेज, एंड दे सफर a lot, and neither the parents are aware of this kind of problem, nor many teachers are also aware about this problem. We deal them firmly. हम उनको जबरदस्ती डिसिप्लिन के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, they feel educational problem because nobody is here at home to provide them guidance. Students suffering from motivational problem, किसी कुछ बच्चे होते हैं एबिलिटी है लेकिन अपने आप को कमतर समझ रहे हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट की कमी है, एस्पिरेशन लेवल में छोटा मोटा काम कर ले, एबिलिटी है बड़ा काम करने की, कॉन्फिडेंस का लेवल कम है, निगेटिव एटीट्यूड आते हैं, इंटरेस्ट की कमी नजर आती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इफ ए पर्सन इज कैपेबल, हैज द कैपेबिलिटी, देन दैट मस्ट बी डू द बेटर जॉब, अच्छा काम करने का उसको मौका मिलना चाहिए। तो ये कुछ मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स हैं, और मैं आपको बता देता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ में कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है कि इफ यू आर मोटिवेटेड टू लर्न, देन यू कैन डू मिरेकल इन योर लाइफ इन ऑल द एरियाज. It is the key of success. Yes, intelligence is also very necessary. If you are an intelligent person, you don't have any motivation for learning and to do the job, then you will be underachieved. First generation learners, ये repeat हो गया. Differently able student आपकी क्लास के अंदर, if you will become a teacher, if you are a teacher, then you face, because we are going to implement inclusive education in our country. It is being implemented to a great extent. तो स्लो लर्नर, आपके क्लास के अंदर स्लो लर्नर भी होंगे, टैलेंटेड भी होंगे, विजुअली चैलेंज भी होंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड भी होंगे डिफरेंटली, और आपके लर्निंग डिसेबल्ड भी होंगे। उनको भी हैंडल करने के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत होगी। कुछ स्टूडेंट के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पर लैंग्वेज का इशू आता है। टेक फॉर एग्जांपल, दे हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट फ्रॉम यूपी एंड बिहार बोर्ड, and they enter in any central university for their graduation. They face difficulty of the language over there, where instruction of language is, or medium of instruction is English. उनके लिए भी गाइडेंस की, उनका मोरल बड़ा, मोटिवेशन लेवल बड़ा नीचे चला जाता है। and we see such kinds of students in our department in this university. Students from marginalized sections of Indian society, माइनॉरिटीज के बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, ओबीसीज के बच्चे हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे हैं, रूरल एरियाज के अंदर लोग रह रहे हैं, रिमोट एरियाज के अंदर लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है। पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं है, फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल एट होम, एंड नोबडी इज हियर टू गाइड देम. सच स्टूडेंट्स आर आल्सो इन नीड ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग. पुअर लाइफ स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, collaboration, independent work,
critical thinking, decision making, technological skill, creativity and problem solving skills. ये सारे skills हैं. आपके पास अगर academic qualification है, if you have the academic qualification, better academic qualification, but you are not having such kinds of skills, आपका communication अच्छा नहीं है, collaborate आप कर नहीं पाते हैं, independent work की आपको आदत नहीं है, critical thinking apply नहीं करते, decision making की ability है ही नहीं, technology का इस्तेमाल आता नहीं है, और creativity reflect नहीं होती, problem से डर जाते हैं. ऐसे लोगों के लिए भी, क्योंकि these skills are the key of success. अब क्वेश्चन आता है why guidance. ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया. अब थोड़ा सा ये भी समझिए कि क्यों देना चाहते हैं हम गाइडेंस. टोटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस क्या है? टोटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. आप देखिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्कूल के अंदर होना चाहिए. देयर मस्ट बी अ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इन द स्कूल. देयर मस्ट बी अ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इन एजुकेशनल institution at higher education also, and there must be guidance and counseling program for all other technocrats and for all the other employees also. किस चीज के लिए? For total development of the students. आपने देखा होगा कि when education in the beginning, education started from the home. घर से education start हुई. The responsibility shifted to the schools. Now the whole responsibility is in the hands of the educational institutions. और educational institution के अंदर सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? टीचर्स का होता है. Teachers are busy in so many activities. If the teachers are busy, then who will guide them? Who will provide them counseling? Then the role of the guidance and counseling emerges, and it is mentioned in various commissions in the committees that there must be guidance and counseling cell in all educational institutions. And CBSE has made it mandatory to have a counselor in every school. Proper choice of careers. बच्चों को पता ही नहीं होता है कि choices कैसी करनी है, careers हमारा कैसा होना चाहिए, कैसा career होना चाहिए, कैसी choices हमको करनी चाहिए. बच्चों को नहीं मालूम होता है. मालूम क्या होता है? We want to become doctor, we want to become engineer, and some students want to go in IAS and PCS. Nobody will say I want to go in aeronautic company, aeroplane मैं जानता हूँ, scientist बनना चाहता हूँ. Nobody will say. मैं poet बनना चाहता हूँ. Nobody will say. Why? Because in society, there are certain occupations and the professions which are socially accepted, or social status is given to them. अगर आप डॉक्टर हैं, everybody provides you respect. If you are an engineer, then you are a good person. If you are doing BA and BSc, then you are an average student. This is a tendency among. So what happens? Everybody wants to take these areas, in spite of the fact that you don't have the ability to run or to read or to perform better in those subjects. Career को choice करने के लिए there are tremendous choice available, because ultimate objective of our education to live a happy and prosperous life, and that happy and prosperous life will be in that condition if you are receiving education in your interest areas and performing the job which is suited to your temperament. Otherwise happiness तो नहीं आएगी. फिर क्या होगा? वही होगा 47% employed are under stress, anxiety and depression. आप डिप्रेशन लेकर के जियोगे, डिप्रेशन ही दूसरों की जिंदगी के अंदर बांटेंगे. प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. अगर आपको ट्रेनिंग करनी है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर और कहीं और यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तब भी स्टूडेंट को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत होती है. मेनी टीचर्स प्रोवाइड सच काइंड्स ऑफ गाइडेंस इन द स्कूल कंडीशन. Improvement of the study habits. Many students ask us how to prepare better so that we are able to write in the examination. तो टीचर आपको स्टडी हैबिट बताता है. क्या कुछ चीजें होती हैं, अगर उनको कंसंट्रेट किया जाए. When you are studying,
then you must concentrate on the ideas in which you are talking. आप थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरीज को समझिए और फिर उसको ट्रांसफर करिए नॉलेज को फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। मेंटेनेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस को कैसे दूर करें, एंजाइटी से कैसे छुटकारा पाएं और डिप्रेशन को कैसे अपने करीब ना आने दें। These are the some of the aspects which are basically drilled in the guidance and counseling to the student. So maintenance of mental health, this is very important. और इस वक्त mental health बड़ी disturb है. We are suffering from academic pressures, academic issues हमारे पास हैं, economic issues हमारे पास हैं, family issues हमारे पास हैं, political issues हमारे पास हैं, social issues हमारे पास हैं, religious issues हमारे पास हैं. We are in dilemma. Difficult to maintain mental health in present circumstances. क्यों? क्योंकि हम अपने से बड़े को देख रहे हैं, अपने से पावरफुल को देख रहे हैं, अपने से दूसरों को देख करके we have a false impression कि others are happy but we are not. That is basically disturbing our mental health. Helping first generations learn. ऐसे बच्चों की डीलिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको घर से सपोर्ट नहीं मिलती, बट दे वांट टू स्टडी एंड दे हैव द कैलिबर टू परफॉर्म. टीचर्स शुड टॉक टू देम, असिस्ट देम. मैं भी आता हूं, क्या करना चाहिए टीचर. एडजस्टमेंट टू हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन. कुछ बच्चे रूरल एरियाज के आते हैं, दो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आते हैं, रिजर्व टाइप के होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं. दे फेस डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग विद द हेटेरोसेक्सुअल सिचुएशन. लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हुए शर्माते हैं, बताते चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, आइसोलेटेड होने की कोशिश करते हैं. ऐसे स्टूडेंट को भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लो कॉन्सेप्ट, सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स. और ये पर्सनल प्रॉब्लम है लो सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एस्पिरेशन. ये पर्सनल प्रॉब्लम है. आपका कॉन्सेप्ट लेवल लो है, एस्पिरेशन लेवल आपने छोटा सा बनाया है, बट आपके अंदर कैपेबिलिटी है. इसको कहते हैं फॉल्स एस्पिरेशन. टू मच एस्पिरेशन एंड टू लिटिल एस्पिरेशन बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेबिलिटी इज टर्म्ड एज फॉल्स एस्पिरेशन. गाइडिंग द टैलेंटेड एंड द क्रिएटिव स्टूडेंट. मैंने आपको बताया कि टैलेंटेड और क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. क्रिएटिव को मोर क्रिएटिव कैसे बनाया जाए, टैलेंट को कैसे यूटिलाइज किया जाए, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी विल यू अडॉप्ट टू टीच योर सब्जेक्ट इफ टू टैलेंटेड स्टूडेंट एंड टू द क्रिएटिव स्टूडेंट्स. First of all, we need to understand the characteristic features of the talented student, characteristic features of the creative student, and how to identify this talent and how to guide such kinds of students. There are many strategies available in education for handling the talented and the creative student. इस पे पूरा एक लेक्चर हो सकता है. Helping the differently able student. इन differently able student को, जिनको हम कहते हैं स्लो लर्नर है और गिफ्टेड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उनको कैसे हम डोमेन के अंदर लाएं. एडजस्टमेंट टू पीयर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स. हर स्टूडेंट को एडजस्ट करना होता है अपने दोस्तों के साथ में, टीचर के साथ में और अपने पेरेंट्स के साथ. Sometimes students face difficulty in making adjustment with the peers, with the teachers. They hesitate to talk to the teacher. They hesitate to talk to their peers. Neither they are free, having the free intermingling with their parents. अपने पेरेंट्स से भी अच्छी उनकी इंटरमिंगलिंग नहीं हो पाती है. ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके गाइडेंस की जरूरत होती है. एनहांसिंग मोटिवेशन लेवल. यू कैन डू इट, यू हैव द कैपेबिलिटी. रीइंफोर्समेंट दे करके उनको मोटिवेट किया जा सकता है. डेवलपिंग लाइफ स्किल, जो मैंने बताया, कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिएटिविटी स्किल, इनिशिएटिव स्किल, सारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी गाइडेंस, ग्रुप गाइडेंस किया जा सकता है, काउंसलिंग भी की जा सकती है. डेवलपिंग रिसर्च ओरिएंटेशन. आपका ओरिएंटेशन रिसर्च की तरफ चला जाए. इफ एनी टैलेंटेड स्टूडेंट इज देयर, क्रिएटिव स्टूडेंट इज देयर, then what the teachers can do, the teacher can guide that person to creativity. आप उनसे कहिए कि you engage research. When I was in AMU,
जब मैं एमएड में था तो मेरे एक टीचर जिनके अंडर में मैं डिसर्टेशन कर रहा था, उन्होंने जब when I was at the completion of my dissertation, he said one word for me, you are a good student, it will be better you go for the research. ये क्या है? It was a guiding sentence, and because of that guidance he made some other motivation remark for me also, and I inclined to do the research, and after that I got many success in that area. क्वालिटेटिव, तो टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जमीन से आसमान तक पहुंचा सकते हैं स्टूडेंट। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, और जब हम सारी चीजें ये कर लेंगे, गिफ्टेड को भी गाइडेंस दिया, स्लो लर्नर्स को भी गाइडेंस दिया, डिफरेंटली एबल को भी गाइडेंस दिया, एनहांस मोटिवेशन लेवल को हमने एनहांस कर लिया, और फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को भी वी प्रोवाइड गाइडेंस. So what we are doing, we are basically contributing to enhance the quality of education in our educational institution. And when we will enhance the quality of education, the quality of the people will also be enhanced. Role of teacher. थोड़ा सा टीचर के बारे में रोल की बात करते हैं, और एक टीचर क्या कर सकता है. देखिए, आप काउंसलर तो है नहीं, याद रखिए. You are not a counselor. This lecture is for the teachers, not for the counselor. अगर एक काउंसलर के लिए लेक्चर होता तो इसमें दूसरी चीज आती है कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है. You are not supposed to be the counselor, but you can provide some assistance to the counselor and you can provide certain guidance to the students. पहली प्रॉब्लम कहाँ से आती है स्टूडेंट की? सबसे पहली प्रॉब्लम क्लासरूम से इमर्ज होती है. Take for example, a person is less interested in the mathematics. He has the hesitation to learn mathematics, fear of mathematics in his or her mind. When he or she enters in the classroom and the teacher says, mathematics is a very difficult subject, it is not everybody's desire to learn it. हर किसी के बस की बात नहीं मैथमेटिक्स को लर्नना. ये क्या है? It is a demotivating sentence said by the teachers in the beginning of the class. On the other hand, one teacher is there who says mathematics is the most simple subject. It is the simplest subject. If you know some tricks how to proceed or to solve mathematical problem, then you can do miracle in that area. So effective teaching क्या होती है? Effective teaching means you are teaching up to the potential of the student. You are guiding the student. You are identifying the problems of the student. You are asking questions from the student. You have made full preparation of the lecture in advance. You are delivering the lecture with the coordination and cooperation of the students. इतने सारे काम आप करते हैं. You are presenting the content with the help of models, charts, and writing important point on the blackboard. Your communication style is very, very effective. You are addressing to the slow learner, average students and the above average students. तो बहुत सारी educational problem जिनके लिए बाद में जिसको हम कहते हैं low motivation की problem, they are automatically solved. If you are providing effective teaching, it means you are solving many guidance or counseling related situations. सारी प्रॉब्लम पर फुल स्टॉप लग जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट इससे फायदा उठा सकते हैं. So being a teacher, it is my responsibility to work on my teaching to make my teaching better and effective for the benefit of the student. Noting vocational possibilities of various subject areas. हर टीचर को ये चाहिए whatever subject you are teaching, जिस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ाते हैं आपको बताना चाहिए कि this subject leads to such and such occupations in such and such areas. You can go in that. Possibility क्या है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? People complete their graduation in physics and in other subject and then don't know the areas where the physics leads to you. कहाँ ले जाती है आपको नहीं मालूम, बताया नहीं जाता है. मैथमेटिक्स का क्या रोल है बताया नहीं जाता है. साइंस का क्या रोल है बताया नहीं जाता. लैंग्वेज कहाँ सिग्निफिकेंट होती है, we are not telling. It is the responsibility. क्योंकि if we are
basically explaining the utility of our subject matter. It means we are assisting the individual in taking the decision to decide their courses in future, demonstrating genuine interest in the student. Teaching का काम सिर्फ ये नहीं है कि you are entering in the classroom and delivering the lecture and just coming out from that. No, this is not it. Teaching is basically to look into to the deep of students. अंदर घुस जाइए student के. Genuine interest in the teaching. If the student is not responding, then why he or she is not responding? If he is not in taking interest, then why he or she is not taking? If his performance is lower, then what I have to do for that? It is very important for the teacher. अगर हम ये सारा काम करते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, तो बहुत सारी हमारी गाइडेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो. Analyzing physical, emotional, social and educational needs of the people in the class. फिजिकल नीड भी हमें अप्लाई करने. कोई बच्चा है बीमार रहता है, परेशान रहता है, इमोशनली डिस्टर्ब है, कुछ बच्चे आइसोलेटेड रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है. सोशल उनकी नीड हो सकती हैं, एजुकेशनल उनकी नीड्स होती हैं, स्टडी हैबिट को नहीं मालूम है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिफिकल्टी हो रही है, दे आर फेसिंग डिफिकल्टी इन मिक्सिंग विद द सोशल सिचुएशन. Then we have to enhance their participation in these areas so that they can learn the skill to handle these situations. Encouraging achievement of this. जब भी थोड़ा सा achievement student का आता है, आप उनके achievement को encourage करिए. Encourage करिए. Encouragement is the key of success. It gives motivation. It is a reinforcement. It is a kind of reinforcement. It rejuvenates the energy of the student. And the students take interest in learning, and when the students take in learning, then learning takes place and process of learning goes on and goes on. Serving as planning committees. बहुत सारी planning committees होती हैं स्कूल के अंदर, institutions के अंदर. उन सब के अंदर गाइडेंस टीचर को अपना रोल प्ले करना चाहिए, पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए. He should not isolate himself or herself from the main task of the school communities. कि मेरा काम नहीं है, I don't want to engage in other words rather than teaching. Yes, you have to engage in many activities, because if you will not engage, then you will not be able to identify the talent and the interest areas and capabilities of the students in many areas. नहीं कर सकते. Performing group guidance services. कुछ problems ऐसी होती है कि दो type की problems होती हैं. There are certain problems which are related to the individual. वहां पर तो आपको काउंसलिंग की जरूरत होगी. There are certain problems which are related to the group. Majority of the students are facing that problem. That is the problem not of the individual, rather that is the problem of the group. वो ग्रुप की प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप ग्रुप गाइडेंस उनको बता सकते हैं. आप लेक्चर एक अलग से सेटल कर लीजिए कि हाउ टू परफॉर्म बेटर इन द मैथमेटिक्स. इफ यू आर अ मैथमेटिक्स टीचर, देन यू कैन टेक a lecture how to perform better in the mathematics, how to learn physics in a better manner, how to proceed to become a good language experts. आप लैंग्वेज को कैसे सीखें, एक ग्रुप गाइडेंस टेक्निक्स है. एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. काउंसलिंग के नहीं होंगी, लेकिन एजुकेशन की प्रॉब्लम. एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू पेरेंट्स. पेरेंट टीचर मीटिंग इसीलिए रखी जाती है, बिकॉज पार्टिसिपेशन ऑफ द पेरेंट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. And guidance is not possible without taking the cooperation of the parent, taking the cooperation of other teachers, counselor, and all members which are associated in the schools. सबका होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के प्रॉब्लम ठीक हो पाती है. Being accessible to students. ये कब होगा? When you are making yourself accessible to the reach of the student. जब आप स्टूडेंट्स आपके पास आता है, you scold the child. I am not free at the time. Go here. आप मिलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, इंटरेस्ट स्टूडेंट के अंदर नहीं दिखाते. ये मेरा काम नहीं है, फला साहब के पास चले जाइए. Go to that person. Talk to the principal. Such kinds of sentences are said in frustration. क्यों? क्योंकि टीचर खुद स्ट्रेस के अंदर होते हैं. जो वो स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस मैंने बताया ना, वो जो पूरी एनवायरमेंट के अंदर फैलता है. अपने आप को एक्सेसिबल बनाइए. कंट्रोल करना हमें आना चाहिए. इवन इफ वी आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इवन इफ वी आर इन एंग्जियस, then we must be able to control our emotions, because we are the leader. हमें ये सोचना चाहिए, we are the leader, we are the role model, and students have a lot desire from us.
and we have to fulfill their desires, fulfill their aspirations, fulfill their expectations. Making students refer. टीचर को एक बात और भी समझ में आनी चाहिए कि टीचर इज नॉट ए काउंसलर, कि सारी प्रॉब्लम आप ओढ़ करके बैठ जाएं अपने पास एंड यू आर ऑल द टाइम टॉकिंग टू देम। आप हमेशा उनसे बात कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम में लगे हुए हैं, आपने पढ़ाना लिखाना छोड़ दिया। नो, यू आर नॉट सपोज टू डू द टास्क ऑफ द काउंसलिंग। योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, मेक certain steps, take certain steps in your whatever are in your capacity, and then refer the problem to the counselor. अब आपके स्कूल के अंदर कोई काउंसलर है तो आप उसको रेफर करिए उस प्रॉब्लम को, या फिर प्रिंसिपल को आप थोड़ा सा उस सिलसिले में आप बताइए। तो ये आखिरी बात थी कि जो आपको जो है, अब कुछ ट्रेड हमें डेवलप करने पड़ेंगे। अगर हम इन ट्रेड्स को डेवलप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि if you are able to demonstrate these traits, then we are basically coming close to the counselor. काउंसलर के कुछ ट्रेड्स होते हैं, वो ट्रेड अगर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएं तो we will be able to understand many problems of the students and will be able to provide at least some assistance. देखिए, इंटरेस्ट इन पीपल, हमें आइसोलेटेड नहीं रहना। We have to show interest in the people. How many students are slow learners in my class? How many students are genius? What type of aspirations people are having in my class? ये पता होना चाहिए। What they want to do, उनका मोटिवेशन लेवल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, पर्सनैलिटी का टाइप क्या है, इंटरेस्ट इन पीपल, ये हमें पता होना चाहिए। और ये कब होगा? When we identify their problem. कुछ टेस्ट होते हैं, IQ का टेस्ट ले लीजिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट का टेस्ट ले लीजिए, एस्पिरेशन का टेस्ट ले लीजिए, और फिर देखिए उसके रिजल्ट बाद में चल करके। पेशेंस होता क्या है? टीचर्स डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट पेशेंस। देखिए, पीपल चेंज इन देयर बिहेवियर, एंड बिहेवियर चेंज इज नॉट a very difficult task. It takes time. There is a possibility that you are taking much time. Patience आपके अंदर होना चाहिए, and sensitivity to others' attitudes and reactions. दूसरों की sensitivity का भी हमें पता होना चाहिए कि others are having others के दूसरों के attitude क्या हैं, उनके की sensitivity का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। Emotional stability हमारे अंदर होनी चाहिए। We should not demonstrate imbalanced personality or irritation, frustration in our temperament. Emotionally stable रहिए। In a difficult situation, you are demonstrating patience and stability in your temperament and attitude. Objectivity हमारे अंदर होनी चाहिए, चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखने के लिए, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी इसको कहते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर आपके चेहरे से दिखना चाहिए, आपकी बात से दिखनी चाहिए। बीइंग ए टीचर, बहुत सारे टीचर्स होते हैं बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर से हैं, एंड स्टूडेंट्स एंजॉय देयर टीचिंग, उसको हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ब्रॉड माइंडेडनेस, टीचर का ब्रॉड माइंडेडनेस होना भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है कि नैरो माइंडेडनेस ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर is not expected in such a diversified society where people are coming from rural and urban backgrounds. They are coming from socio-economic background, different caste and creeds and colors and temperament and the philosophy and other aspects also. Teachers must demonstrate democracy, freedom, equality, objectivity. ये बड़े permanent aspect हैं। इसको कहते हैं ब्रॉड माइंडेडनेस। स्टूडेंट की प्रॉब्लम को नजरअंदाज करना। स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक्स। इफ यू आर नॉट ब्रॉड माइंडेड देन वी विल स्कॉल्ड देम। उसको आप पनिश करने की कोशिश करोगे। आप अपने दिल को बड़ा रखिए, ब्रॉड माइंडेड रहिए, वाइडर थिंकिंग में जाइए, एंड समझिए कि इट इज द टेम्परामेंट ऑफ द स्टूडेंट टू कमिट द मिस्टेक, एंड मिस्टेक्स can be rectified if we provide the guidance. Intelligent, टीचर को इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, and we consider all teachers are intelligent, because when we are appointed in any educational institution, we are passing the
interview board and we are taking the degree from any university, तो we are intelligent. इसको हम ऐसे मैं कह सकता हूँ कि the teacher must be able to use his intelligence in teaching and guiding student. A well-adjusted person. उसका सबके साथ adjustment होना चाहिए. He is happy when he is or she is participating with the students. He is enjoying participation with the teacher, and he has a very good relationship with the principal and the authorities. His task or his objective or his intention must be to develop the individual personality rather than just taking the profession as a profession. He must be a student. Teacher को हमेशा पढ़ना चाहिए, हमेशा उसको कोशिश करनी चाहिए. आखिर में ये बात कहूंगा, आप ये कहेंगे साहब टीचर को इतना सारा काम क्यों करना चाहिए? He or she is also suffering from many problems. If the teachers are also suffering many problems, then teachers should not face any hesitation in talking to the counselor if they are in need of that. बहुत सारी strategies हैं stress को remove करने के लिए. Exercises हैं, yoga है, meditations हैं, ठीक है. अच्छे आपके दोस्त होने चाहिए, अच्छा फ्रेंड सर्किल होना चाहिए, और उन इश्यूज से दूर रहने की जरूरत है जो हमारे माइंड के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है, देयर इज एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज व्हिच इज प्रेजेंट टुडे. दिस एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज इज आल्सो बिकमिंग अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग द टीचर्स. तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है. अ टीचर कैन टीच, टीचर कैन गाइड, teacher can direct, but teacher cannot provide counseling to those students who are suffering problem. Then the teacher must refer the problem to the, जैसे डॉक्टर को जब लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वो किसी अच्छे डॉक्टर को रेफर कर देता है. तो आपको जब लगे, तो आप अगर आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई काउंसलर नहीं है, तो वी कैन डिस्कस द प्रॉब्लम विद अदर टीचर्स कि इस केस के अंदर हमें क्या करना चाहिए. So this is all about. I was given 1 hour and I have completed my talk in 1 hour. I started my discussion for 4:40 and it is 5:40 and I am completing my lecture. Thank you very much for giving me the chance to speak before the audience, and I'll be happy to if students are or the participants are having any query or any questions, then you are feel free to ask. Yes, sir. Anyone? Anyone want to ask? जी. I think sir, no one have any query. Okay, no issue. Sir, how deal with the hyperactive children? Hyperactive. कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं. देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि when we are dealing with the students, तो आप बिल्कुल उनको परफेक्ट लाइन पर नहीं ला सकते. बीइंग अ टीचर, perfection is not desired, neither it is present in any student. If I am talking about the school level of education, वो perfection कभी नहीं आ सकता. कहीं ना कहीं डेविएशन ही होगा. टीचर को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हाइपर एक्टिव लोगों को एंगेज करना चाहिए. We need to engage in hyperactive children in different activities. उनको जहां जहां जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन कराइए. क्लासरूम के बहुत सारे काम होते हैं. एंगेज देम दोज स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, मेक देम लीडर और मेक देम फील टू बी द लीडर ऑफ द क्लासरूम. तो अगर हम ये कंटिन्यूअस बेसिस पर कुछ चीजें करते रहेंगे, एक्स्ट्रा उनको काम देते रहेंगे उनके इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज के हिसाब से, then they will be able to solve the problem. Yes. Any more question?
Thank you so much. Okay, sir. I think no one have any query. I think we should end up this. Thank you very much, sir, for coming these wonderful sessions and all participants giving a good feedback about regarding this lecture. So, sir, can you speak something regarding this sessions or this academy? Okay, you are asking about my from me. Yes, yes, sir. Yes. Yes, yes, sir. देखिए, Can this you, academy is working a great job in guiding and providing training to the teachers and the research scholars, in making them aware about the different aspects of the knowledge, these different aspects of the teaching learning process. I have seen many of the programs organized by this academy. They are covering a large area. They are talking about the effective teaching. They have touched the area of the guidance and counseling. They have given opportunity to speak on inclusive education. They are talking about the ICT, and many more programs are being organized. And the most important thing is that they are utilizing the best resource persons or the better resource person to engage in such kinds of program. It is a great contribution in the field of the education. I really appreciate and I congratulate to all the members who are associated to the Bharat Digital Academy to carry on the task, and I support this academy. And whenever they will feel I should be a helping hand or assisting hand or provide any guidance, I will be available for without any hesitation at any time. thank you very much, sir, for wonderful words. I think we should leave it as time is 5:45. If anyone want to ask something, then otherwise we will end up. Okay, sir. Thank you very much for coming to the session, sir. Thank you, Thank you everyone. very much. Thank you, all participants. Actually, we will provide the feedback link after this completing this training program. Na? So actually, yesterday some participant asked about the feedback form, and today is also asking a feedback form link. Na? We will share the feedback form the last day of this training program. Na? Okay. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, everyone. For, Thank you so much. Thank you so much. thank you.